ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार, ABP न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर गवाह है, विस्तार से खबरों की शुरुआत। जो खबर देश में सिस्टम की नाकामी की गवाह है उसी से करने जा रहे हैं। और ये जो सिस्टम की नाकामी है उसकी बलि चढ़ने वाले बेकसूर हिंदुस्तानियों की जिंदगी, 25 हिंदुस्तानी जो मारे गए। मैं बात गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड की कर रही हूं। वो अग्निकांड जिसे 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक अग्निकांड के असली गुनहगार यानी क्लब के मालिक लूथरा बंधु कानून के शिकंजे से दूर हैं। क्लब के मालिक गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। फरार होकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। और इस बीच फरार क्लब मालिकों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। फरार होने के बाद क्लब मालिक गौरव लूथरा की ये पहली तस्वीर है जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वही तस्वीर है। ये है गौरव लूथरा। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कहिए आप इसको, 25 लोगों की मौत का गुनहगार कहिए आप इसको, क्योंकि तमाम सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए ये क्लब चला रहे थे। यही क्लब का मालिक गौरव लूथरा की ये तस्वीर आपके सामने। तो गोवा नाइट क्लब में एक ऐसा अग्निकांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या रसूख और क्या पैसे के आगे सिस्टम इसी तरीके से सरेंडर कर देता है? आखिर क्यों बेशकीमती जिंदगियों की परवाह किए बगैर ऐसे क्लब को परमिशन दे दी जाती है और उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है अपनी जिंदगी देकर? तो गौरव लूथरा फरारी के बाद उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एडिटर है वेस्टर्न रीजन के ABP न्यूज के। जरा गणेश से ही ये समझते हैं। गणेश, ये जो तस्वीर सामने आई है गौरव लूथरा की, फरारी के बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है, कहाँ की ये तस्वीर है, कुछ जानकारी? जी देखिए, इमिग्रेशन के समय ली गई ये तस्वीर है। जब वो भाग रहे थे इंडिगो की फ्लाइट से तब इमिग्रेशन के दौरान ये तस्वीर ली गई थी और अब ये सर्कुलेट हुई है क्योंकि जो ब्लू कम नोटिस इशू हुआ है उसके बाद तमाम एजेंसीज को इस बारे में इत्तला किया गया। ये तस्वीर भी दी गई, पासपोर्ट के नंबर्स दिए गए और CBI से गोवा सरकार अब संपर्क में है क्योंकि CBI नोडल एजेंसी है। तो CBI के जरिए आप इन दोनों भाइयों तक पहुंचने की कोशिश डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए गोवा सरकार और केंद्र की दोनों भाइयों ने उनके कुछ वकीलों के जरिए शायद संपर्क करने की कोशिश की और आत्मसमर्पण करने की बात वो दोनों कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि दोनों सरेंडर कर दे और सरेंडर करके गोवा पुलिस के सामने हाजिर हों, क्योंकि अब उन पर तोड़क कार्रवाई यानी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो गोवा सरकार अब इनका जो अर्थचक्र था दोनों भाइयों का, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने मिलकर रोमियो लेन ये पहले वैगनर में शुरू किया जिस पर आज बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद रोमियो लेन इतना फेमस हो गया, सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, सब कुछ होने के बाद में गोवा में 2-3 ब्रांच खुले और फिर आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, दुबई, कई जगहों पर रोमियो लेन ये इस ब्रांड के नाम पर अपनी फ्रेंचाइजी देकर या खुद इन्होंने होटल्स क्लब खोले हैं। तो जो अर्थचक्र है दोनों का, उस पर मार करने की कोशिश अब गोवा सरकार ने की है। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की हलचल तेज हो गई। तो तमाम चीजें अब गोवा सरकार कर रही है ताकि दोनों भाई आत्मसमर्पण करें या लॉ को फेस करने के लिए भारत वापस आए। ठीक है, तो जानकारी ये है कि शायद रहिए गणेश, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, गोवा क्लब में जो अग्निकांड हुआ है इसको लेकर अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ही देर में अग्निकांड वाले क्लब पर बुलडोजर वाला एक्शन होगा। बुलडोजर चलेगा इसी नाइट क्लब में जहां आग लगी थी। फरार लूथरा बंधुओं के खिलाफ ये बड़े एक्शन की तैयारी है। ये देख रहे हैं आप, वो बर्ज बाय रोमियो लेन, यही वो क्लब, गोवा का नाइट क्लब जहां अग्निकांड हुआ और 25 जिंदगियां खत्म। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले इसको लेकर जो एक्शन होना है बुलडोजर वाला, क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, आपको सुनाते चलते हैं। हमने ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, हमको क्या लेना देना है? बीच साइड पे जो एनक्रोचमेंट है हम वही डेमोलिश करने वाले हैं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में पीछे है वो हम लोग डेमोलिश नहीं करेंगे। तो जितना पहले हम यहाँ पे कंप्लेंट हुआ था और जुलाई में हमने एक बार डेमोलिश ऑलरेडी हो चुका है तो ये वापस एनक्रोचमेंट हुआ है। कितना एरिया है? 198 स्क्वायर मीटर्स।
तो अभी तुरंत डेमोलिश करेंगे, इसकी जानकारी आपने ओनर्स को दी है? कैसे क्या ओनर्स के देने की जरूरत नहीं है, बीच पे एनक्रोचमेंट हुआ है। ओके, तो एनक्रोचमेंट हुआ है तब तो नोटिस कुछ देने की जरूरत नहीं, वी कैन रिमूव द एनक्रोचमेंट डायरेक्टली। सर, आज ये फैसला इतना अहम, इतना तुरंत लिया गया? नहीं, तुरंत लिया नहीं, इसका डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था, तो एक्शन हम अभी ले रहे हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। धीरज वागले, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म। तो सुना आपने किस तरीके का ये एक्शन जो लिया जा रहा है, और यहां पर अब बुलडोजर गरजेगा, जो भी अवैध निर्माण है उस सारे अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गोवा अग्निकांड के वो जो विलन हैं, अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लूथरा बंधु, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। क्लब को इन्होंने कब्रगाह बना दिया, 25 जिंदगियां यहां खाक हो गई झुलसकर। कईयों की मौत दम घुटने की वजह से हुई क्योंकि यहां नियमों का पालन नहीं किया गया था। और अब बुलडोजर वाला इंसाफ, बुलडोजर चलेगा। 2 और क्लब इन्हीं लूथरा बंधुओं के सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी छापेमारी की जा रही है। सीधे चलते हैं, गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा गणेश से जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, फरार क्लब मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये बड़ी खबर है इस वक्त। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर बहुत बड़ी खबर, लूथरा बंधुओं के खिलाफ ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, कामयाबी मिली है, जांच एजेंसियों को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया गया है लूथरा बंधुओं के खिलाफ? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ब्लू कॉर्नर नोटिस काफी महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई ऐसा आरोपी विदेश भाग जाता है तो आखिर वो विदेश के किस लोकेशन पर है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अन्य एजेंसियों की मदद लेनी होती है, और इसी सिलसिले में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, जो कि सीबीआई की मदद से जो इंटरपोल डेस्क होता है वहां से इसे जारी कराया गया है। और फिर अब ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हो गया है। इस ब्लू कॉर्नर नोटिस से अब गोवा पुलिस को ये मदद मिलेगी कि आखिर लूथरा बंधु है कहाँ पर। थाईलैंड, फुकेट की जानकारी तो है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन और बाकी की चीजें इस नोटिस से मालूम पड़ जाती है, ताकि अन्य एजेंसियां भी मदद करनी शुरू कर देती हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे दर्शकों को लोकसभा लेकर चलते हैं। चुनाव सुधार पर राहुल गांधी। Speaker sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of khadi? And why is it that he only wore khadi? Because khadi is not just a cloth. Khadi is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people of Aaj pehnaun khadi. It is the expression of the people of India. Speaker sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear their jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker sir,
These fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework.
So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing. Relax. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So, प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थोड़ा बता दे Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है एलओपी का मतलब नहीं आप जनरल बात बोलो आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात सर हम लोग सुनना चाहते हैं सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं धमकी देंगे आप हम लोग सुनने के लिए बैठा है अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ हम सुनने के लिए बैठे हैं अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है समय बहुमूल्य है समय का मर्यादा भी है सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे सुझाव दे सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से आप विषय पर ही रहिए हम लोग सब बैठे हैं गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing LOP. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing LOP. Subject में नहीं आपका LOP. आपका LOP subject में नहीं. ये विषय कर रहे हैं. The discussion that one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए एक मिनट
एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य में बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister
has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो। नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana.
These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this country. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you.
राहुल गांधी का जोरदार प्रहार सरकार पर। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि जो सबसे बड़ा देश विरोधी काम किया जा सकता है वो वोट चोरी का है, और ये सरकार इस देश में वोट चोरी कर रही है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बल्कि सबसे महान लोकतंत्र है, और इस महान लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी की तरफ से तीन बुनियादी सवाल उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। पहला सवाल ये कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजीआई को क्यों नहीं रखा, उनको क्यों हटा दिया। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून बदला और जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें इम्यूनिटी दी, ये कानून में बदलाव क्यों किया गया। साथ ही सीसीटीवी और डेटा से जुड़े कानून क्यों बदले। ये तीन बुनियादी सवाल जो राहुल गांधी ने अपने इस संबोधन के जरिए रखे संसद में। और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार सरकार करना ही नहीं चाहती, करना तो बहुत आसान है, जो नियुक्ति का नियम है उसको बदल दीजिए आप। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले सरकार मुहैया करा दे, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी का सरकार पर वोट चोरी का बड़ा आरोप। खबर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी वोटर कब बनी, इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बिना भारत की नागरिकता हासिल किए 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में था। याचिका में दावा किया गया 30 अप्रैल 1983 में सोनिया गांधी को नागरिकता मिली, जबकि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली वोटर लिस्ट में था। इसको लेकर सवाल पूछा गया है कि आखिर किस दस्तावेज के जरिए 1980 में सोनिया गांधी को वोटर बना दिया गया। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। 6 जनवरी 2026 इस मामले में सुनवाई होगी। तो ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं सोनिया गांधी को नोटिस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये आरोप हैं। प्रियंका गांधी सामने आई और उन्होंने इन आरोपों को सिरे से झूठा करार दिया है। अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा इस पूरे मामले पर, और बीजेपी आक्रामक अंदाज में सोनिया गांधी के नाम पर घेराबंदी राहुल की कर रही है। कह रही है राहुल गांधी जवाब दें। 1980 में जब सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टरल रोल में उनका नाम आया था। अब चूंकि जुडिशरी ने सोनिया जी को नोटिस इशू किया है और आज आप देखिए पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उस पर राहुल गांधी जी क्या सफाई देते हैं। तो सोनिया गांधी को जो कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला है, प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए, जो सियासी घेराबंदी हो रही है उस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिरे से झूठे हैं। सोनिया गांधी ने हमेशा देश की सेवा की है। मैम, नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का आरोप है। वोट डाला है देश के अंदर, प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं, बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।